we've all spoken about कि ये show हमारे it's very close to our hearts. So tell us a bit about the show, and over the course of the evening we'll tell them about the story as well. But what does this show mean for us, for Indian audience, and for you personally? So it all started with the concept. हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में? हिंदी? हाँ. तो एक 2 साल पहले हमें बहुत लोग कहते थे कि आप हर शो में शादीशुदा लोगों को इतने हैप्पी दिखाते हैं. I mean, शायद इसलिए क्योंकि आपने अब तक शादी की नहीं है, so you see the happy side from far. But उसे आपने हमारी लाइफ में प्रेशर बढ़ा दिया है, ऐसी बहुत लड़कियां कहती थी. तो ऐसा मतलब कि परफेक्ट बहू, परफेक्ट बेटी, ये जो परफेक्शन जो एक ओनस एक लड़की के सर पे आता है शादी का, कि वो शादी निभाए. जब शादी 2 लोग करते हैं तो एक क्यों निभाए. उस बात से एक बात निकली कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो दे आर प्रो स्टेटस, नॉट प्रो मैरिज. मैरिज इज नॉट जस्ट अ स्टेटस, इट्स अ बीइंग. इट्स अबाउट 2 लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक जिंदगी गुजारते हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी होती है. और अगर एक जिम्मेदारी नहीं निभाए तो दूसरे पर ये ओनस नहीं आना चाहिए कि वो अकेले ये जिम्मेदारी निभाए. ऐसी हजारों कहानियां हमने बनाई हैं, शायद वो पवित्र रिश्ता हो या फिर बड़े अच्छे लगते हो, जहाँ हमने लोगों को ये कहा है कि शादियों को निभाना ज़रूरी है. बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों की शादियां टूट भी जाती है. इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ज़िंदगी जीने का हक नहीं है, या कितनी लड़कियों को हम वो शक्ति नहीं दे पाते. वी डोंट गिव देम दैट स्ट्रेंथ टू टेक देयर लाइफ ऑन देयर ओन हैंड्स इफ टुमारो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ बिट्रेयल देयर मैरिज डज नॉट वर्क. So this is that one show which I'm doing for that world, that society, for those women who need the strength to walk and get into to live their life again. They are stuck in a bad marriage. When I went and told this to Udair, Shankar and Ajit, they told me आप ये बनाओ. I said chances are, I mean 30% chance नहीं चलने का हर शो का होता है, इसका 50% है. So she said, why would you do that today? You have Ye Mohabbatein working, you have so many shows working. Why would you take that risk? I said some shows you do because you need to do them for the society you live in. This is that show for me. You talked about Indian women, but Indian men के लिए क्या मैसेज आएगा इस शो से? Be good husbands. Be good to your wives because it's not just their responsibility to make a marriage work. You do a mistake, it's a mistake. If she does a mistake, it should not be a lifelong blame game. Well, सबसे पहले तो कहूँगी कि what does this show mean? I think considering the fact that I am doing fiction after 10, 12 years, itself says that this show means a lot to me. And you know, she's scaring me by saying this about this 50% chances. But yes, that's what is scaring me. But Ekta's there. And I trust her. So एकता की जो स्टोरी टेलिंग है वो हमेशा इससे ही लेयर्ड रही है, और इस शो में खास करके आई थिंक उन्होंने इतने लेयर्स दिए हैं कैरेक्टर्स को दैट इट वाज वंडरफुल टू हियर द स्टोरी, एंड it was a no-brainer that I had to do this role, this character. The strength of this character was amazing. कई बार मुझे लगता है कि जब strong characters, especially women characters के बारे में जब लोग लिखते हैं, वो उन औरतों को बहुत मर्द जैसे बना देते हैं. They make them very manly, and which is not very attractive to me. Because मुझे लगता है कि a woman has a strength in being feminine, and I'm very proud of being feminine, and I enjoy my femininity. And that's what she gave me when she's written this character. There is no loss of femininity, and yet there's so much of strength, which is so believable, and which is how it really should be. And that's what has attracted me more than anything else to this character. Economic independence for women, most women in India, at least people, I meet so many Indian girls when I go for like dip tests here or there, that they tell me that they get married and they get a degree just so that they can get hitched to a good boy, and that degree is lying there. They're not even allowed to work. It becomes a family decision, which is, I respect that, but that dependence towards a family makes them weak, not strong. Dependence can be emotional, and that should make you stronger. Somewhere the show makes a lot of people have a wake-up call that you can be anyone, you can be badly stuck in a situation, but you should be independent financially, and somewhere your family should give you that strength
to stand up on your own feet, because tomorrow your own family can be running through a bad time and you can chip in, you know. So it is about economic independence. It's about being the daughter, not a daughter-in-law. When something goes wrong, you have married into that family, so automatically if something goes wrong with your husband, you take on the responsibilities of family like you would do for your own family. So Shobha does that, and it's also about, at some point it's an anti-betrayal, it's not anti-marriage. It's about if one person betrays the other, why should the other one cover up? Is marriage a pretense just because society expects you to? Wow, I hadn't seen it, even a bit of the show till now. This is the first time I saw it. Really nervous. But I have to say one thing. The thing that resonated with me always was, my mother's been a housewife. We are 3 sisters. The first thing that my mother always said, and which I remember very well, when my elder sister was getting married, she was really young, the rishtas were coming, the family was, you know, the usual thing. And my mother always said one thing, that till my daughters don't work, I will not get them married. And she told us that it's your choice. Once you get married, you don't want to work. It's as a couple you decided, great for you. That's your call. I'll never interfere with it. But till you leave my house from here, I want a working girl to get married. And you know, we used to be like, okay, she's really passionate about it and everything. As we started working, as we are married women today, and as we grow up, you realize the importance of that. It's just the way you think as a woman, the kind of confidence you get to face situations when you know that you can. It's not about how much you earn, or it's not about how fancy the job is. It's just about getting the confidence that, yes, I am somebody and I can do something. Just that confidence can be the difference of heaven and earth in a relationship. See, my take is very simple. I just love the institution of marriage. I've been married for it's been almost 10 years now. My wife is my best pal. Just love spending time with each other. You know, before I got married, I used to read about this theory about soulmates. And the theory said कि आपको जब अपना soulmate मिलता है. हेलो, शादी ना तो माने ना अच्छी बात है, ना बुरी बात है, ना सही है, ना गलत है, ना उसमें कुछ खूबसूरत है, ना बदसूरत है. ये आप ही के हाथ में है कि आप उसको क्या बनाते हैं. और कुल मिला के वो यही है कि 2 लोग आपस में सारी जिंदगी बिताते हैं, और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद आप लड़ते पिटते, घाव माने रिश्ते हुए घाव, बहता हुआ खून, इस सब के बाद आप उधर पहुंचते हैं और पीछे पलट के देखते हैं कि ये सारी लड़ाई आप दोनों ने एक साथ मिलके जीती. तब वहां जाके शादी का जवाब मिलता है. अब जब आप लोग ये पहले 5 साल में 10 साल में शादी का जवाब ढूंढने लगते हैं, वहां कोई जवाब नहीं होता है. शादी तो वहां शुरू भी नहीं होती है. 2 आदमी का साथ रहना बहुत मुश्किल है. हर इंसान की अपनी कमियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, आदतें होती हैं, और इस पर तो 2 लोग साथ होते हैं. कभी कोई अच्छा कुछ कर लेता है, कभी कोई रायता फैला देता है. दोनों में से कोई भी हो सकता है. उसके बाद फिर आपको चुनना है कि आप उसको तब भी निभाना चाहते हैं या नहीं निभाना चाहते हैं. और निभाने के बाद की जो जीत की भावना, अगर आप उसे कह लें, वही उसका सुख है. सुख ये नहीं है कि आपने 7 फिल्में देखी या नहीं देखी. सुख ये नहीं है कि आपने एक जैसी किताबें पढ़ी या नहीं पढ़ी. उसका सुख आपको तब जाके मिलेगा अगर आपकी वो पेशेंस है. जैसे कि आप कहते हैं कि हमने अपने माँ बाप को 40 साल साथ देखा, हमने अपने माँ बाप को 50 साल साथ देखा, लेकिन उन 40-50 सालों में 2 लोगों का साथ रहना बहुत 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 मुश्किल काम है. जब तक आप ये नहीं जान लेते, शादी की बात करना बेकार है. इसमें सही गलत अच्छा बुरा सब आपके हाथ में है. जीत आपकी वहां है, लेकिन खूब सारी चोट खाने के बाद, खूब सारी परेशानियों के बाद, बहुत सारे दुख, बहुत सारी खुशियां, इन सब का मिश्रण है जो वहां जाके पता चलता है. अगर वो 2 लोग वहां पहुंचे तो यही है. इससे और इसमें कहीं भी कोई आसान रास्ता ढूंढना वो बेवकूफी होगी. I just know this much that it's a journey of Shobha, and because the character will have such strong, interesting stands, I said what bigger tribute to give her than give her my mother's name. So that's why I cast Sonali and I called the character Shobha, because if she makes a bold step
And if somebody condemns her, then they'll be condemning the name called Shobha. Well, then so be it. So we stand by her, we stand by Shobha's decisions, and we want the viewers to stand by her too. She actually is going to be a product of a lot of viewer thinking. We actually don't know how we're going to end this show. But we know one thing, we'll know how our society thinks. Thank you so much. As far as I'm concerned, it's bold, it's controversial. There have been many shows with extramarital affairs where the man takes the foot forward. This is first of all not an extramarital affair. It's bold because the woman goes to search for her own job, and it's funny. It's a funny look at how life pans out when you think you've all have it all planned. So if it's bold and controversial, and I think it will be interesting and emotional also. So be it. Like I said, the strength of the character, the fact that she does decide to take life in her own hands and move on. Very rarely do you find people doing that. Yes, a lot of women, I find that with most people in the world. You want to remain in a comfort zone. You want to say, like how Shobha's mother tells her, कि झूठ के साथ जीना आसान होता है. So do you want to take the easy way out? I am always for taking the tough way out, because I think that's always the more interesting, more adventurous. And you live life more that way, and that's what is lovely about Shobha. She takes life head on. Let's That's get what I someone like else. about her. Here. अभी आपने कहा कि 50% चांसेस इस शो के चलने के नहीं है. चलिए, अगर मैं कहता हूँ कि 100% एंड 1 ये शो चलता है और सुपर हिट होता है, तो क्या कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे आप अपने स्टार कास्ट को? क्योंकि गिफ्ट करने के लिए बहुत ही मशहूर है आप इंडस्ट्री में. I wish कि कोई मुझे कुछ गिफ्ट करे यार. Don't you think I deserve a gift too? सबको मैं गिफ्ट दूं, कोई मुझे नहीं देगा. शो चल गया तो हम सारे मिलकर उनको गिफ्ट देंगे, ये बात है. बहुत आज बड़ी ही बात पक्का. है. टीवी इंडस्ट्री में आने के लिए. और मैं ऐसा आज ही तो कहीं पढ़ रहा था कि 4 लाख पर एपिसोड के मिलने वाले हैं आपको. इज इट ट्रू? I think, I don't know if the amount is true, that is not very, what would I say, accurate. But मैं यही कहूँगी कि it is the first time on television for me in fiction. मेरे सामने मेरे सीनियर्स हैं, मिस्टर बच्चन है, अनिल कपूर है, जिन्होंने शुरू की है ये शुरुआत, और बहुत इंटरेस्टिंग रही है वो शुरुआत, अप्रिशिएट भी हुई है वो शुरुआत. एंड आई थिंक टेलीविजन में ये जो सीजन हम फाइनाइट सीरीज जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मूव है. एज एन ऑडियंस आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग कि एक कहानी शुरू आज हो रही है और हमें मालूम है कि इतने एपिसोड्स बाद इधर या उधर पर उसका कुछ तो एंड होने वाला है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड लाइक आई सेड, मोर देन एनीथिंग एल्स, ये जो whenever you're doing a job or whenever you get together for a thing, the team is very important.